Good. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Beloved Baba, please be with us throughout this journey. Help us, guide us, give us pleasure of your company and darshan. Thank you, Baba. Jai Baba. Beloved God, help us all to love you more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's thumb till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Loving Jai Baba to all. We are reading Meher Baba's early messages to the West, and the wonderful chapter is through the. This is a script written by Baba for the film, and through the lifetimes selected 5 lifetimes, he is showing how, what type of karmic impressions, and today we will see what type of what are those experiences a soul experiences on the plains, how he feels, what are his experiences. It's wonderful. But before moving for that, I'll request our dear Dinah to present, because we are reading an extra those when Baba visited West and whatever was published about Baba in those periodicals, magazines, newspapers, all the articles and publications. So every time we are reading one or two or three pages. Today we have selected page number 306 and 307. I took a look and it doesn't show up when I look for it in the book. I have sent you email. Okay, but I didn't get the image. Is it? Oh, Unless how I have sent it to Betty also, Jai Baba Betty and Mr. Prakash also. I have sent those images. Oh, there it is. Got it. Yeah. Okay. If you, So, you sent me so many. the 306 is the image page we will read now, the first email of all this, because this one is this is how it looks. So Yeah, this one, please present this one. Just a second here, if you don't mind. I'm getting Yeah, please, sure. And I'll request Gangre sir, if he has the image and if he has come out of his cataract surgery, he can read it, but you can please present it. What the first image I have here is a modern meeting of Master. Is that it? By Elizabeth Patterson. None in miracle turns Parsi. None in miracle turns Parsi. It's about Princess Norina Matchbelly. What I heard from Gangre sir is page number 307 is very difficult to read. I don't know. I didn't. This one. Can you see this? I didn't receive that one. See this one? Just a second. I have so much. I don't. This one. Can you see my screen? Yeah, I see your screen. This one. I have so many things up here. Yeah, I have to look for it. No problem. Take your time. Meanwhile, Gangre sir will continue reading so that we can utilize time. Jai Baba, everyone. May I Please, start? Okay. This is page number 306. And
It is written article from the Evening Gazette, Xenia, Ohio, November 22, 1933. 2 decades earlier, Princess Norina Machbeli, under the stage name Norina Karmai, had starred in the role of the Madonna in the Miracle, a sensationally successful play written by Karl Wollmoiler, her husband at the time, in 1933. With the announcement of her impending divorce from her second husband, Prince Matchbailey, uh, several newspapers carried articles on her career and newly formed connection with Meher Baba. The article is Nun in Miracle Turns Parsi. This is a subheading. And there is the picture is there, and below that, Maria Carmina, Princess Matchbeli, as the nun in the miracle, and as she looked when returning from Europe. Maria Carmina, the beautiful Italian actress who is known in private life as Princess Matchbeli and who alternated with Lady Diana Manners in the role of the nun in the miracle, has embraced the Parsi religion and is a devotee of Sri Sadguru Meher Baba, who has not spoken for 9 years. The princess claimed that she was cured of tuberculosis by impersonating the Madonna in the pageant. Her husband, Prince Matchbeli, a Georgian, is said to be contemplating a divorce on account of the princess' religion. This finishes. Page number 307 is not readable at all. I mean, it is Okay, English. okay. That is okay, sir. We can straightway go to page number 308. We are sorry that we couldn't present it. Now, this is the 308. It is the last page, multiple pages it is. That is about Elizabeth Patterson, and down it reads 184. Actually, it says the article from Occult Review, September 1934. In this principal literary venue for the Western subculture of those interested in the occult, theosophy, and mysticism, Elizabeth Patterson published a detailed and moving account of her first meeting with her spiritual master. There are multiple pages, so only one page we'll read because that is the only we can read. But I will like to know from any of you, as last time someone had, I think Rosa and someone was with her, he had then given us all the material, and now there is a separate session in Baba's home about Princess Norina Matchbeli and her miracles, that it reads as miracles. So likewise, a modern meeting of master and child by Elizabeth Patterson. Yeah, these are the next pages we will read. Before that, we'll read this page. A Modern Meeting of Master and Child by Elizabeth Patterson. This frank self-revelation on the part of an American lady of the reactions of her inner life in the presence of Meher Baba throws an interesting light on a mystifying personality. Where from they have taken this is page number 186, then 187, 188, 189, 190, 191, 192. My request to all the Westerners, our brothers and sisters, if someone can find it out, we'll like to have that complete.
but right now we'll read one page. Sir, can you continue, please? Yeah. I first Yeah. heard of Sri Baba. Okay. Jai Mere Baba. I first heard of Sri Meher Baba through a letter from a friend in November 1932, asking me if I would like to meet him, as he was then in the United States on his first visit from India. The name sounded strange to me, and I wondered what kind of spiritual being a perfect master was. Though I did vaguely consider that I might be interested. However, I put the letter away on my desk, and in the same rush of New York events, I forgot all about it. Until one morning early, I received a telephone call from the same friend. Would I come to Herman that very day, 30 miles up the Hudson River? Baba was there and I could see him for a few moments. My mind was crowded with engagements. Never had a day seemed so full, and the idea of the country seemed a long way off in the fall of the year. I opened my mouth to make my conventional excuses, and then something happened. I said yes instead. I had just been looking at my calendar covered by appointments, and suddenly it had become blank. Only much later did I perceive the symbol on this white new page. What actually took place was not on the calendar, but in my mind as my seemingly urgent affairs passed through swiftly. As a drowning man is purported to review his life, each one suddenly faded, and in importance, someone else could do this today, or I could put that off until tomorrow. How grateful now I am that it was not the meeting with Baba which I put off, for I have since seen the effect of one day's delay resulting in a long period of time before meeting the Master. I have also noticed how the call seems to come when people are busiest. Or is it that we feel the draw of the world's affairs most when the spiritual impulse calls? Imagine I had only to be gone a day. At here I was making such rearrangements. My city life had indeed caged my independent spirit. A friend from California with whom I had It's okay. Thank you, sir. That sentence is incomplete because I don't know in which book all this is. We have to find out if any one of you know, kindly let us know. It is interesting to go through the full part of it. It must be some book, I think. Okay, so coming back to our reading, yes, Diana, now you can show the pages now you were showing, which we are going to read. The most interesting part of today's reading, how one experiences on various planes. Okay, let me see. Yeah. It's not the No, it is the typed one. oh, the typed one. Okay, Yeah, textual, 182, page number from 182. got it. Okay, Yeah, just a second. I can do it. I just need to do a few things here. no problem. Just a moment. It's coming. Leisurely, comfortably, you had shown a while ago. So No, I last think it was shown. It was shown by
Prakash. Okay, let's see if we've got it. Do you like that? Yeah, this is what. Okay, and I can make it. Yes, this excellent. Yeah, this is where. So the prince in the first plane now, yeah, here second paragraph will be reading here from here. Yes. Can you enlarge it? Just a It second. will be better, yeah. I have to, That's better from directly book you have taken. So last time we had seen three characters X, Y, Z. In the first life, they were man-eaters and how X murders Jed. The second life, the Jed becomes cruel king and murders X, who is a foreigner. Throughout this journey, we saw the Y is a character stable, not very harmful, of good karmas and good actions. The third life, again, this Y, who was a cruel king, becomes an honest merchant, and X becomes his wife. And the fourth life, the X again becomes a prince of India, prince in India, and Y becomes his wife, and Z again becomes their slave. This fourth life is shown as the turning point in their lives. And X is the person who was a man-eater and first cannibal man in the first life, and now he is a prince in India. And last time we had seen that he met with a master. Master asked him to leave everything. He leaves his kingdom. He leaves everything. Just obeys master. He even begs in his own kingdom. So that is a full surrenderance. Because of this full surrenderance, he gets, now his entry is on the spiritual path. He enters the spiritual path. And this X, who was a prince, who has left kingdom, who has given up everything at the order of his master, and now he has his experiences on the various planes in the very lifetime. This fourth lifetime, he travels till the fifth plane, fourth plane. He covers the journey up, he enters the spiritual path and he covers the journey up to fourth plane. What he experiences on different planes, that we'll be seeing now. So this prince who had obeyed implicitly 100% to his master, given up the kingdom, and he had begged in his kingdom, and his wife is also accompanying him. Now he has entered, and his experience on the first plane will be see. Yes, Mr. Ralph Jayabab. There's hand raised from Ralph. May not be, I mean, we know this is a story, but they're jumping one life to the next. Like, I'm wondering what happened to God Speaks and the 8,400,000 lives to get from, I mean, probably 8 million lives to get to the fifth plane. And these guys are doing in the story, but I mean, but I'm wondering when was these stories, and is Baba is talking to a different audience, perhaps not the God. Baba has given this script for a film. For a film. Movie. Yeah. Yeah. Well, That was, the film was to be, perhaps you have missed the previous portion. oh.
we have already covered it. Baba visited Hollywood especially for this. Yeah, Good that you asked. It will clarify the question in the minds of many. So Baba had visited Hollywood. They wanted to make a film on spiritual theme in which Yeah. he is going to explain how the karmic impressions and what are the experiences on the path. He has written this script himself. He has even given the characters, description of characters, and what is the scenario, that also we have read last time. Scenario also we have read, how it should be picturized, what scene should be shown there. So this material is, though for the film, it explains us, it helps us to understand many things which is given in God's space. So now we will read the experiences on the path. On the path, how this, we have also seen the connection, interconnection, karmic entanglements of the characters in between. It's beautifully, such a complicated subject which cannot be explained many lifetimes. Within 4 lifetimes with 3 characters, he has explained beautifully. If we there, understand there it. is, the master is involved, which means Yeah. the rapid progress, spiritual Yeah. progress. Even Is it? now I see that even the tiger or the lion, the tiger was instantly, the master looked at the tiger and the tiger became. Yeah, we have gone Yeah. much ahead of it. Now we are on page I'll number leave this alone. 182. Yeah. Okay, thank you, Jai Baba. Jai Baba. So now we'll start reading. The prince in the first plane finds his gross body disconnected and set apart, and through his subtle body into bracket, which is exactly like the gross body in every detail, except that it is smoke-like, vapory, and transparent, gets the subtle experience. Into this subtle ears are poured forth streams of sweet, melodious, enchanting, thrilling, and exquisite sound rhythms and beautiful tunes, the like of which he never had dreamed of. His subtle nose smells such a sweet, refreshing scent that he feels rejuvenated completely. His subtle eyes see different luminous ultra colors and innumerable small circles of steady light, with his master's figure looming large in the circles. He now finds his gross body attached to him, and so comes to the gross consciousness. But the tremendous impressions of the subtle experiences had such an effect on him as to leave him in a dazed condition. It's wonderful. Now, for our eastern part, I'll just in short explain in Hindi, and then also I will like to post one question. How many of us had this experience of heavenly music, sweet fragrance, and body detached from us? We are floating somewhere up and we are experiencing. Please put your hands like this, thumb up or hands up, or put in a chat. Meanwhile, I'll just explain in short. So, ये जो है चौथे जन्म में, पहले जन्म का जो एक्स है, जो मांसाहारी है, मनुष्य का मांस खाता है, हमने देखा कि अब चौथे जन्म में भारत के एक प्रदेश का वो राजकुमार है और अपनी गुरु की आज्ञा से वो अपना राजपाट, बीवी सब कुछ छोड़ देता है, अपने ही राज में वो भीख मांगता है
और ऐसे संपूर्ण समर्पण का सुंदर उदाहरण और पूर्ण आज्ञाकारिता का उदाहरण है, तो आगे वो अभी आध्यात्मिक पथ पर प्रवेश करता है। और आध्यात्मिक पथ पर पहली भूमिका में वो क्या अनुभव करता है, तो फर्स्ट प्लेन में वो अनुभव करता है कि उसका स्थूल शरीर से वो अलग हो गया है। वो स्वयं अपने स्थूल शरीर को एक निश्चल रूप में देखता है। वो अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव उसको आ रहा है। अपने स्थूल शरीर से वो अलग है, अपने सूक्ष्म शरीर को अनुभव करता है और अपने सूक्ष्म इंद्रियों के साथ, इंद्रियों के आधार पर उसे बहुत सुंदर संगीत सुनाई देता है। उसे बहुत ऐसी सुगंध मिलती है जो उसने जीवन में कभी अनुभव नहीं की। उसको छोटे छोटे गोल दिखाई देते हैं, उसमें सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, सुंदर कलर के दृश्य दिखाई देते हैं। और ये गोलों में उसे अपने गुरु की प्रतिमा दिखती है, जैसे कि गॉड स्पीक्स में दिया है कि आप अगर अपनी गुरु की मार्गदर्शन में यात्रा कर रहे हैं, तब जब आपको सुंदर दृश्य दिखते हैं तो उसमें आपको आपकी गुरु की छवि दिखती है। This I'll explain in English also. So उसको अपनी गुरु की छवि उसमें दिखती है और इस प्रकार से उसको कई सारे गोल दिखाई देते हैं। ये उसका अनुभव है पहली भूमिका का। अब ये अनुभव लगातार नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर चला जाता है। फिर से उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ जुड़ जाता है और इस तरह से। लेकिन जब वो उस अनुभव से बाहर आता है तो अपने आप को एक एक हल्कापन महसूस, एक अलग वो स्थिति होती है। एक डेज्ड कंडीशन है, हल्कापन है, एक जिसको थोड़ा होश नहीं है तुरंत दुनिया का, ऐसी वो कंडीशन होती है। ऐसी स्थिति में वो आ जाता है। So this is what is explained in God Speaks also. When one experiences such sights, and if one is traveling under the guidance of the master, he sees the image of his masters in those images. So this is what he experiences here. Now comes second plane. अच्छा, साथ ही में मैंने ऐसा पूछा था कि ऐसा अनुभव किसी को हुआ है कि अपने शरीर से अलग होने का? कृपा करके बताइए, है हम में से कोई ऐसा? आगे सेकंड प्लेन, नेक्स्ट सेकंड प्लेन. इन द सेकंड प्लेन, the prince, as in the first plane, sees his gross body lying aloof and gets more subtle experiences through his subtle body. He sees the innumerable small circles of steady light becoming one limitless mass of shattered light. He experiences his subtle body traversing through the shattered mass of light, which he feels always near him and with him during his travel, and feels inexpressible thrills of ecstasy during this sojourn. Very good. At times, he finds his subtle body merge in light. He sees millions of spirits without dense body, with smoke-like, transparent forms moving about very rapidly and making signs to each other. He then sees these spirits dancing. This dancing of spirits is so weird, so wonderful, so fantastic that he is completely dumbfounded and enthralled. He now gets full knowledge from within of all that happens in the world. Through his subtle senses, he now exists and sees all the world affairs whenever he likes. From one corner of the world, he knows what is happening in the other corner of the world
during the traversing of his subtle body. These are experiences on the second plane. Here he sees so many vapory spirits, other subtle bodies. So now in Hindi, दूसरी भूमिका में फिर से अपनी स्थूल शरीर से अपना सूक्ष्म शरीर अलग होते हुए वो देखता है। एक अनुभव होता है। स्थूल शरीर एक बेजान कॉप्स, मृत शरीर जैसा पड़ा रहता है बेड पे चाहे कहीं भी, और हम ऊपर कहीं रहते हैं और वहां से हम सब कुछ देखते हैं। तो वैसा ही इसको ये अनुभव होता है, और वहां पर फिर से उसको कई अनगिनत गोल दिखते हैं प्रकाश के। वो प्रकाश स्थिर है और एक बिखरा हुआ प्रकाश है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, अनंत ऐसा बिखरा हुआ प्रकाश भी उसको दिखता है। और फिर उस प्रकाश से वो देखता है कि उसकी शरीर वहां से यात्रा करे, वो प्रकाश को भेद कर उस सॉरी प्रकाश को पार करके वो उसका वो सूक्ष्म शरीर आगे जा रहा है। और उसका इस यात्रा के दौरान वो देखता है और अनुभव करता है, उसको बहुत रोमांचित हो उठता है, परमानंद होता है, और इस प्रवास में उसे बहुत खुशी मिलती है। वो एक अलग आनंद होता है जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जैसे उसका स्थूल शरीर से वो अलग हो जाता है, तभी उसको एक हल्कापन, बहुत सारी खुशी महसूस होती है। अब क्या होता है, उसके साथ ही उसकी जो सूक्ष्म शरीर है, एकदम सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर जैसा ही होता है, उसका वैसा ही आकार होता है, लेकिन वो मतलब भाव जैसा हम समझते हैं ऐसा होता है। अब यहाँ पर वो अनुभव करता है कि ये उसका सूक्ष्म शरीर उसी प्रकाश के साथ मिल गया, उसका शरीर सूक्ष्म शरीर प्रकाश के साथ एक हो गया। और फिर वहां पर उसे अनगिनत और भी ऐसे सूक्ष्म शरीर और आत्मा दिखाई देते हैं। वो सारी आत्माएं भी भाप जैसे होती है, धुएं जैसी होती है, और एकदम पारदर्शी फॉर्म होते हैं। उसका अपना भी फॉर्म पारदर्शी होता है, उनके भी शरीर पारदर्शी होते हैं कि उसके अंदर से सब कुछ जा सकता है, ऐसा होता है। तो फिर उसमें वो देखता है ये सारे आत्माएं डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, लेकिन वो सारे डांस करने वाले इतने इस प्रकार के वियर्ड, मतलब अजीब होते हैं, अद्भुत होते हैं, जबरदस्त होते हैं, फैंटास्टिक होते हैं। इतना वो आत्माओं का डांस जो है अद्भुत होता है, वंडरफुल होता है, कि इससे वो भौचक्का हो जाता है, अचंभित हो जाता है, साथ ही रोमांचित होता है, एंथ्राल्ड होता है। अब वो उसे इतना ही नहीं, तो उसे अब दुनिया का पूरा ज्ञान होता है। एक कोने में बैठकर दूसरे कोने में दुनिया की क्या हो रहा है ये वो जान सकता है, वहां बिना गए। वो ऐसा है, देखो, ये जो जानना है ना, हम एक जगह पे है, मानो कि मैं अहमदाबाद में हूँ, मेरा पति अगर बंबई में है, बंबई में गए बिना हम कुछ देखते नहीं, ऐसा दृश्य नहीं दिखाई देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है, लेकिन वो फीलिंग होता है, एहसास होता है। मुझे पक्का मालूम पड़ता है कि अभी मेरा पति कहाँ है, क्या कर रहा है, समझे? तो मतलब उस जगत के एक कोने में रहकर दूसरे कॉर्नर में क्या हो रहा है उसका पूरा उसको खबर पड़ती है, अंदाजा आता है, वो एक एहसास होता है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर द्वारा उसको अनुभव किया जाता है। अब इसके जो सूक्ष्म इंद्रियों हैं वही अस्तित्व में होते हैं, और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा वो पूरे सब कुछ जान सकता है। एक संसार के एक कोने में बैठकर दूसरी कोने में क्या हो रहा है, ये जब उसके शरीर वो प्रकाश को पार करके जाता है,
तब वो अनुभव करता है। तो आगे पढ़ते हैं। We'll continue our English portion. I don't think anything is needed to be explained in English. Is it needed? No, you all know it very well, no? Yeah. We Yeah, only know the Diana is text. telling happily, it is not required to explain in English. Fine. It is to be experienced. And if we experience once, there is no need to explain because it is beyond words. And by His grace, He has given such experience. So understand it very well. Eventually, he feels his gross body attached to him, and so comes down to the normal consciousness amongst other gross-minded people. But the deep impressions of the second plane have given him such powers as to be able to read the mind of anyone he likes if the person be near him. Again, here also, his subtle body is connected with his gross body. But even if this experience stops, with the experience, he gets such powers that he can read the mind of the person who is near his vicinity. So, यहाँ पर अंततः वापस उसका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जुड़ जाता है, उसे स्थूल का भान आ जाता है। लेकिन स्थूल का भान आने के बावजूद भी इस अनुभव के कारण उसे जो शक्ति मिली है, उस शक्ति के कारण अनायास से, बिना कोशिश किए या सोच कर भी, अपने अगल बगल के, अपने सानिध्य में, आपके पास के लोगों के मन के विचार वो जान सकता है। आगे थर्ड प्लेन, we'll go to the third plane. In the third plane, he again finds his gross body set apart. In all the planes, Baba has given this body apart. In the third plane, he again finds his gross body set apart and his subtle body so engulfed in the shattered mass of light as to find it a piece of that light. He becomes himself that light. His ecstasy is more intensified than it was in the second plane. He here sees millions of mental bodies of other advanced souls in the form of vapory seeds, and with his subtle body tries to make signs to them and to understand their signs. In the second plane, he says only subtle body of others, which are like gross bodies, but which are in the vapory form, like smoke, like dusty, but those are like gross body. But the difference is here, in the third plane, he sees mental bodies, and mental bodies are not like gross bodies, not like the image of this body, but it is also vapory, but seed-like, dot-like. He feels inexpressible thrills all through his subtle senses. Again, in time, he finds his gross body attached to him and comes down to the gross consciousness. The supernatural impressions of the third plane have now given him such powers as to be able to perform miracles of healing with touch or thought or sight, and of reading the mind of anyone, irrespective of the distance, as also the minds of other souls on the subtle plane. So, तीसरी भूमिका में यहाँ पर भी फिर से उसका शरीर, स्थूल शरीर से उसका सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है, और वो ऐसे प्रकाश में, जो बिखरा हुआ प्रकाश है, उस प्रकाश में उसका पूरा सूक्ष्म शरीर घिरा होता है, जैसे कि उस प्रकाश का ही वो एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है।
और यहाँ उसका परमानंद इतना तीव्र होता है कि दूसरी भूमिका से भी अधिक आनंद उसे यहाँ मिलता है। जैसे हम गॉड स्पीक्स में देखते हैं, हर भूमिका के साथ उसे और अधिक और अधिक और अधिक आनंद मिलता है, और उसको शक्तियां भी और अधिक और अधिक और अधिक शक्तियां मिलती हैं। यहाँ पर वो लाखों मनोशरीरें उसके अगल बगल में देखता है। दूसरी भूमिका में उसने क्या देखा था? सूक्ष्म शरीर देखा था। सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? वो भी भाप जैसा, स्मोकी धुएं जैसा होता है, पारदर्शी होता है, सुंदर होता है, हल्का होता है, लेकिन इस शरीर की आकृति जैसा ही वो होता है। लेकिन मनोशरीर को आकृति नहीं होता है, मनोशरीर का आकार नहीं होता है, मनोशरीर इस शरीर की प्रतिमा जैसा नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी। मनोशरीर केवल एक बीज जैसा होता है, और वो भी भाप जैसा, स्मोकी, इस प्रकार का होता है। तो दूसरी भूमिका में जब वो देखता है तो सूक्ष्म शरीर देखता है। तीसरी भूमिका में वो लाखों मनोशरीरें अपने अगल बगल में देखता है, और वो बीज के रूप में देखता है। वो सारे मनोशरीर उसको संकेतों के माध्यम से कुछ कह रहे हैं, और ये भी उनको संकेतों के माध्यम से कुछ कह रहा है। दोनों केवल संकेतों की भाषा समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज वंडरफुल, क्योंकि यहाँ स्थूल शरीर नहीं है, भाषा नहीं है, जुबान नहीं है, माध्यम नहीं है। इतना उच्च कॉन्शियसनेस है, हाई कॉन्शियसनेस। बिकॉज ऑफ दैट दे अंडरस्टैंड जस्ट द सिग्नेचर्स, एज बाबा हैज एक्सप्लेन इन क्रिएशन एंड कॉन्शियसनेस, that there is a word where 100% brain is active, where they don't need language. They just, with the sight and eyes and expressions, they transfer thoughts to each other. They don't use any language. So इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो जुबान से बात नहीं करते हैं, they just make the gesture, संकेतों से ये आपस से बात कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ ये अनुभव लगातार नहीं होता है, स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स या मिनट भर रहता होगा, वो तो समय का पता ही नहीं चलता जब हम इसको अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर वो फिर से अपने स्थूल शरीर के साथ जुड़ जाता है, और ये जो अलौकिक अनुभव उसने अनुभव किया, उसकी ऐसी छाप उसके मन पर रह जाती है कि इसके द्वारा उसको बहुत अधिक शक्तियां मिलती है, दूसरी भूमिका से भी अधिक शक्तियां मिलती है। इतनी शक्तियां वो प्राप्त करता है कि केवल एक स्पर्श से, केवल हम बोलते हैं ना आपको आशीर्वाद है, केवल किसी की शुभेच्छा, विश व्यक्त करके, इच्छा व्यक्त करके, ये अपने केवल विचारों से कि अरे नहीं नहीं इसको कैंसर नहीं होना चाहिए, केवल किसी को देख करके वो दूसरों को ठीक कर सकता है, उनकी बीमारी ठीक कर सकता है। किसी का भी मन के विचार वो पढ़ सकता है, मन की बात जान सकता है। फिर वो व्यक्ति उसके सन्निध में नहीं है, दूसरे शहर में भी है, दूसरी जगह में भी है, तो भी उसके विचारों को ये व्यक्ति पढ़ सकती है। वहां पर डिस्टेंस कोई बाधा नहीं है। और इसी के साथ और एक बात है, जो आत्माएं सूक्ष्म भूमिकाओं, जितनी आत्मा है, मतलब 1 से 4 भूमिकाएं, 1 से 3 भूमिका तक, उनके भी मन की बातें ये आत्मा जान सकता है, ये साधक जान सकता है। आगे चलते हैं। ये दिस इज थर्ड प्लेन इज ओवर नाउ इन इंग्लिश। द फोर्थ प्लेन, so what we saw is, first plane, he hears music, smells, sees various beautiful sights, and he sees many other, that's all. He sees his master's image in that round circles. In the second plane, again his body is separated from his gross body, his subtle body is separated, and there very bliss he experiences in this.
his body becomes a part of that light he experiences. He sees many subtle bodies and he can read the mind of other persons. And all this he experiences through his subtle senses. And the third plane, he sees mental bodies. He has more bliss, more power. He can read the minds of others. He can heal others. Now the fourth plane. In the fourth plane, the prince again finds his gross body dislinked and sees with his subtle eyes the unlimited mass of shattered light as one whole undivided ocean of steady light. He finds his subtle body traversing on the surface of the ocean of light. He sees other innumerable subtle bodies of other souls and millions of mental bodies as well. He reads the minds of these subtle bodied souls and also holds direct communication with the mental bodied souls. The ecstasy is now much, much more intensified. When his gross body reacted to him, he comes down to the level of other gross conscious souls. But the superimpressions of the fourth plane have now given him such supernatural powers as to enable him to raise the dead, give sight to the blind, and also create other temporary gross forms. तो यहाँ पर चौथी भूमिका का जो the fourth plane is called the dangerous point, where he has many powers and there is a danger of misutilizing them. तो चौथी भूमिका का उसका अनुभव यहाँ पर फिर से अपने स्थूल शरीर से उसका सूक्ष्म शरीर विभक्त हो जाता है, अलग हो जाता है. I had this experience when I was in Ahmedabad just for a few minutes. And without any reason, we never know why it was given. Just you are floating somewhere upside and then you have this experience. So फिर से यहाँ पर उसका शरीर अलग हो जाता है उसके स्थूल शरीर से. बहुत सारा बिखरा हुआ प्रकाश वो देखता है. ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा प्रकाश का सागर है जिसमें संपूर्ण एक प्रकाश स्टेडी है. अब वो हिलता प्रकाश नहीं है. और ये देखता है कि उसका जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो प्रकाश का महासागर है, उस महासागर पे उसका शरीर तैर रहा है. बहुत सुंदर अनुभव. और फिर वो देखता है कि इसी के साथ उसके साथ ही अनगिनत सूक्ष्म शरीर वहां पर है, अनगिनत मनोशरीर भी यहाँ पर है. अब यहाँ सूक्ष्म शरीर मनोशरीर दोनों को वो देखता है दूसरे आत्माओं के. और फिर वहां पर वो जो सूक्ष्म शरीर है उनके भी मन के बात, क्योंकि वहां पर मन तो अभी भी है, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, उनके भी मन की बात वो पढ़ सकता है और उनके साथ और मनोशरीर वालों की भी, क्योंकि मनोशरीर है इसलिए तो मन है. मन जाएगा तो फिर तो परमात्मा बन जाएगा. When mind goes, he will become God. God realized. So he can read the minds of subtle bodied spirits and mental bodied spirits as well. यहाँ पर उसका जो परमानंद है इतना तीव्र हो जाता है और फिर बहुत आनंद की, ये आनंद अलग होता है, बहुत हल्कापन, बहुत शुद्ध, वो सुंदर आनंद होता है. और फिर उसकी सूक्ष्म शरीर उसके स्थूल शरीर के साथ जुड़ जाता है, वो नीचे आ जाता है, स्थूल चेतना में आ जाता है. परंतु ये जो अद्भुत सुप्रीम महत्वपूर्ण अनुभव उसे मिला चौथी भूमिका का, इसके कारण उसको सुपरनैचुरल शक्तियां मिलती है, जिसके कारण ऐसी अमर्याद शक्ति उसको मिलती है
कि उस शक्ति के कारण वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, अंधों को दृष्टि दे सकता है और स्थूल शरीर निर्माण कर सकता है। आगे जाके बाबा ने क्रिएशन एंड कॉजेज में लिखा है कि वो नया एक विश्व तैयार कर सकता है या किसी विश्व को वो नष्ट कर सकता है, परंतु उस समय में जो भी परफेक्ट मास्टर्स वहां मौजूद होते हैं वो उसे ऐसा करने से रोकते हैं। इतनी शक्तियां उसको चौथी भूमिका में मिलती हैं। नाउ कमिंग बैक टू द फिफ्थ प्लेन। In the fifth plane, the prince finds both his gross and subtle bodies set aside. Both subtle and gross bodies, both set aside, and his mental seed-like vapory body as the medium of his experiences. This I have not experienced. Into bracket, in the four planes, he sets aside his gross body and experiences his subtle body, traversing in the light, and in the fifth, he sets aside both his gross and subtle bodies, experiencing everything through his mental body. Now, he is the Lord of the mind. He now finds his mental body traversing the ocean of light and living on the same level as the mental plane spirits. He not only has direct communication with them, but also feels attached to and linked with them. The ecstasy is now immensely intensified, and he finds in his existence a regular flow of divine happiness. A regular flow of divine happiness. Once again, he resumes both his gross and subtle bodies, and the lasting impressions of the fifth plane have given him such powers as to be able to know all the affairs and thoughts of the gross, subtle, and mental worlds. But he does not use his powers as when coming out of the fourth plane. Finally, the prince X and his wife Y die. So, हम लोग ये जो राजकुमार था, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के राजपाट रानी को छोड़ के, रानी भी उसके साथ जाती है, वो भी भीख मांगती है, निकला था, तो उसका प्रवास ये हम देख रहे हैं भूमिकाओं का। ये पांचवी भूमिका में जाता है और पांचवी भूमिका में क्या अनुभव करता है अब, क्योंकि पांचवी भूमिका मनोजगत की है। नाउ ही इज इन द मेंटल वर्ल्ड. He has the consciousness of mental world, not of the gross and subtle. So he leaves both the bodies and experiences only the mental body. तो यहाँ पर उसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों छूट जाता है। अब वो अपने मनो शरीर का अनुभव करता है। उसका मनो शरीर कैसा होता है, ये भी बाबा ने यहाँ एक्सप्लेन किया है। उसकी कोई प्रतिकृति होती नहीं, आकृति नहीं होता है, एक बीज जितना ही मनो शरीर होता है। ये भी भाप जैसा रहता है, स्मोकी रहता है, और यही उसका माध्यम, इसका मनो शरीर ही उसका माध्यम है सब अनुभव करने का। जैसे कि वो चौथी भूमिका में वो अपना स्थूल शरीर अलग रख के सूक्ष्म शरीर के साथ वो प्रकाश के माध्यम से यात्रा करता है, प्रकाश बन जाता है। अब पांचवी भूमिका में वो अपना स्थूल और सूक्ष्म शरीर बाजू रख के वही प्रकाश को सब कुछ वो अनुभव करता है अपने मनो शरीर द्वारा। ये महत्वपूर्ण है। पांचवी भूमिका में वो ना ही अपना स्थूल शरीर के इंद्रियों का उपयोग करता है, ना ही सूक्ष्म शरीर के इंद्रियों का उपयोग करता है। He do not uses his gross or subtle body senses, but he uses only his mental body. अब
यहाँ पर वो मनोभूमिका की आत्माओं को भी अनुभव करता है। उनके साथ वो सीधा संपर्क केवल प्रस्थापित नहीं करता है, परंतु उनके साथ एक होने का वो अनुभव करता है, इनके साथ जुड़े होने का वो अनुभव करता है। He experienced that he is linked with other mental bodies as well. और उसका आनंद इतना परमानंद होता है, वो परमानंद इतना तीव्र होता है कि फिर उसके अंदर एक अद्भुत दैवी आनंद का वो अनुभव करता है। डिवाइन हैप्पीनेस, अद्भुत, वंडरफुल, एक दैवी आनंद वो अपने आप में अनुभव करता है। और फिर एक बार ये सभी शरीरों के साथ वो जुड़ जाता है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ उसका मनोशरीर जुड़ जाता है। और इसका जो इस अनुभव के कारण जो प्रभाव उस अनुभव का उसके ऊपर पड़ता है, लास्टिंग इम्प्रेशंस ऑफ दिस एक्सपीरियंस, उसके कारण उसको इतनी अद्भुत शक्तियां मिलती है कि पूरे संसार के स्थूल सूक्ष्म मनोजगत के हर भूमिका में, हर स्थूल जगत में जहाँ कुछ जो कुछ हो रहा है वो सब वो समझता है और कई सारी शक्तियों का वो उपयोग कर सकता है। लेकिन वो अपनी शक्तियों का उपयोग पांचवी भूमिका में बिल्कुल करता नहीं, क्योंकि वो जानता है ईश्वर का अस्तित्व, वो जानता है जो कुछ होता है वो ईश्वर की मर्जी से, डिवाइन प्लान से होता है, जिसमें दखलंदाजी देना वो पसंद नहीं करता है। He knows that whatever happens is as per divine plans, and he do not want to interfere them. So he do not use his powers and do not make any miracles on fifth plane. वो पांचवी भूमिका में कोई चमत्कार करता नहीं, जबकि उसके पास पूरी शक्तियां होती हैं। ये कहानी है एक्स जो प्रिंस था। अब यहाँ पर पांचवी भूमिका अनुभव करने के पश्चात अंततः ये राजकुमार एक्स और उसकी बीबी वाई दोनों मर जाते हैं। एक्स एंड वाई डाई। Now Baba continues the script, the story for the movie. But story mein Baba is revealing so many spiritual facts because the film is based, the theme of the film is spiritual. And wonderfully, it is so complicated, such a big chapter, but in such a few words he has explained it. That is the beauty. A master of masters. Baba is the master of masters. Now he is coming, his script is coming to the fifth plane. Just a few 4 pages. He has revealed the whole truth of the word and the creation and the pura God speaks. The whole God speaks he has put in 4 pages. So fifth life. Panchva Jivan hai. The fifth life of the same character X, Y, Z. We have seen them in different lifestyles. They were businessmen, this and that. Now this is their fifth line. And what happens in the fifth line? Life. Cast of characters. X, the one who was prince in the previous life, who has progressed till the fifth plane. Y, the prince wife in the previous life. Z, the slave of the prince in the previous life. All these X, Y, Z now become brothers. All become brothers. In the fifth life, they all become brothers. Scenario. Baba has explained scenario also. X, Y, and Z are now brothers, sons of a grand multimillionaire in America. अब अमेरिका में एक लखपति के ये सारे बेटे बन जाते हैं, तीनों भी एक्स वाई जेड। अब ये भाई है ये जन्म में, देखो पांचवें जन्म में। दे आर ऑल वेल एजुकेटेड. एक्स इज द लीडर ऑफ द 3. ही इज स्पिरिचुअली माइंडेड, always studies spiritual subjects.
into bracket, the lives of the masters, etc., and is a great benefactor of the poor. His two brothers, also spiritually minded, always obey his wishes. Now the rivalry gone between them. A perfect master comes to America from India. People are deeply impressed by him. They flock to him, are transformed by him. Into bracket, insert sayings of Meher Baba as samples of the perfect master's lectures. Because Baba is writing the script, Baba has given instructions to input Baba's teachings there, sayings. X hears of the master and seeks him out. The master, on seeing X, is very pleased and exclaims, "Here is my man at last." The master embraces X and gives him illumination. He experiences the following. Jैसे, as we see, Baba is waiting for Delia, Baba is waiting for some persons, and then he declares, "He is my man, I was waiting," and all that. So similar. तो यहाँ पर पांचवें जीवन काल में XYZ सभी भाई बन जाते हैं एक बड़े लखपति के। ये सभी पढ़े लिखे हैं अच्छे से। इन सब तीनों का लीडर नेता होता है एक्स। एक्स जो है बहुत आध्यात्मिक मन वाला है और आध्यात्मिक किताबें को पढ़ता रहता है, आध्यात्मिक गुरुओं का जीवन पढ़ता है और गरीबों की बहुत मदद करता है। इसके दो भाई जो है वो भी आध्यात्मिक मन रखते हैं, आध्यात्म की तरफ उनका रुझान होता है और हमेशा एक्स की आज्ञाओं का वो पालन करते हैं, एक्स की मर्जी रखते हैं, जैसा एक्स कहेगा वैसा वो करते हैं। अब देखो, जो पहला जीवन काल में, दूसरा जीवन काल में, तीसरे जीवन काल में इनकी जो दुश्मनी थी वो खत्म हो गई, जैसा हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये एक परफेक्ट मास्टर सदगुरु भारत से अमेरिका आता है। लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उसको देखने के लिए भीड़ जमाते हैं। उसको देखने भर से लोगों में परिवर्तन आता है। जैसे बाबा अमेरिका गए तो कैसा हुआ, इसी टाइप का उसका ये हम सिमिलर कर सकते हैं। यहाँ पर बाबा, हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाबा एक स्क्रिप्ट लिख रहे सिनेमा का, तो इसके लिए बाबा ने ये भी कहा कि बाबा की सेइंग्स जो है बीच में डाल दे यहाँ पर, कि किस प्रकार से वो सदगुरु क्या क्या सिखाता है। और जो एक्स है ये इस गुरु के बारे में, परफेक्ट मास्टर के बारे में सुनता है, उसको ढूंढता है। जैसे वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो गुरु बहुत खुश होता है और वो कहता है कि ये मेरा आदमी है। जैसा हमने बाबा को देखा है कई बार बोलते हुए, ये मेरा परिवार है, ये मेरा आदमी है। और गुरु उसको आलिंगन देता है जैसे बाबा आलिंगन देते थे और दे बोथ एम्ब्रेस। और इस आलिंगन से वो सद्गुरु उसको प्रकाशित करता, आगे करता है, उसको और प्रगति करा देता है। क्यों? क्योंकि पहले जीवन काल में उसने 5th प्लेन तक अपनी प्रगति कर ली थी। उसकी आगे की प्रगति गुरु की मदद बिना नहीं संभव थी। तो उसने अपने आप को तैयार किया था। कैसे बाबा कहते हैं, टू हैव द ग्रेस ऑफ द मास्टर यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ। तो एक्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, इसलिए उसको सदगुरु से मुलाकात होती है। अपने आलिंगन भर से सदगुरु उसको आगे उसको बढ़ा देता है, उसकी प्रगति हो जाती है और 6वीं भूमिका में वो प्रवेश करता है। So as the X was prepared to get the grace of the master, automatically he meets the master and master helps to take him to the 6th plane. Now 6th plane journey. On the 6th plane, he finds his gross, subtle and mental bodies set apart and his spiritual body as a dot of unfathomable light. With this spiritual body,
which has eyes, ears, nose, all in one. He sees the real ocean of light, that is God. His ecstasy is now at its zenith. He does not resume his gross, subtle, and mental bodies. And being thus regardless of the world and its affairs, he is conscious of God and God alone. His gross, subtle, and mental bodies are all merged in the spiritual existence. Wonderful. So, Baba has explained sixth plane experience. And here, first time, Baba has mentioned about spiritual body, which is not a seed, not vapory, just a dot, but it has everything in it. So, यहाँ छठवीं भूमिका में अब वो देखता है अपना स्थूल, सूक्ष्म और मनो शरीर भी वो अलग कर देता है और केवल एक आध्यात्मिक शरीर उसे प्राप्त होता है। पहली बार यहाँ पर बाबा ने आध्यात्मिक शरीर की बात की है। आध्यात्मिक शरीर कैसा होता है? बाबा हैज एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ spiritual body is, because now he has set aside all his three bodies, gross, mental, and subtle bodies. Now he has spiritual body. What is that spiritual body is unfathomable, right? In the form of just a dot. एक बिंदु होती है स्पिरिचुअल शरीर जो है, केवल एक बिंदु होता है। वो बिंदु कैसा? अनंत प्रकाश होता है और उस बिंदु रूपी आध्यात्मिक शरीर के आंख, नाक, कान सब कुछ उस बिंदु में ही होते हैं। ये मेंशन करने के लिए बाबा भूले नहीं है। अब यह आध्यात्मिक शरीर के द्वारा वो प्रकाश का असली सागर देखता है, मतलब ईश्वर को देखता है। इन सिक्स्थ प्लेन he sees God everywhere. But duality is not God. He thinks God is separate from him, he is separate. अब इस आध्यात्मिक शरीर के द्वारा वो ईश्वर को सब दूर देखता है। अब उसके आनंद परमानंद ऐसी चरम सीमा पर पहुंचती है और यहाँ पर वापस जैसे कि चौथी भूमिका, पांचवी भूमिका तक तो क्या होता है? वो सूक्ष्म शरीर, मनो शरीर वापस स्थूल शरीर में आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट he does not come back to the gross consciousness or subtle consciousness or mental consciousness. This is very important point. As it happens till the fifth plane, he does not connect with the gross world. तो इस जगह पर, इस छठवीं भूमिका में अब उसका दुनिया के लेने झमेले से कोई लेना देना नहीं है। अपने स्थूल, सूक्ष्म और मनो शरीर के साथ वो वापस संपर्क करता नहीं, वो गया और अब केवल और केवल ईश्वर के प्रति वो सचेत है। ही इज कॉन्शियस ओनली ऑफ गॉड एंड गॉड अलोन। अब उसका स्थूल, सूक्ष्म और मनो शरीर सब कुछ उसमें आध्यात्मिक अनुभव ने लय हो जाता है। All his gross, mental and subtle bodies are merged in the spiritual experience. यहाँ पर उसके अनुभव पूरा हुआ। आगे बाबा कहते हैं, now the next Baba is continuing. X lies in trance in the superconscious state for 4 days. अब इस अवस्था में, क्योंकि उसको दुनिया का भान नहीं है, ना ही उसका स्थूल शरीर है, ना ही उसका मनो शरीर है, ना ही उसका सूक्ष्म शरीर है, आध्यात्मिक शरीर में ट्रांस स्थिति, बेहोशी जैसी अवस्था, बेहोश नहीं, बेहोशी, नॉट क्लिनिकली अनकॉन्शियस, नॉट क्लिनिकली, बट ऐसी लाइक अनकॉन्शियसनेस, वो जो ट्रांस की स्थिति है, सुपर कॉन्शियस, रादर ही इज नाउ नॉट अनकॉन्शियस बट सुपर कॉन्शियस। वो सुपर चेतना जो है उसकी अब दैवी चेतना बन जाती है।
ऐसी स्थिति में वो 4 दिन रहता है. X lies in trance in the superconscious state for 4 days and then regain his consciousness of the universe with partial illumination. 4 दिन ऐसे ट्रांस की स्थिति में होने के बाद वापस उसकी चेतना आती है. वो विश्व के साथ थोड़ा विश्व का भान आता है और उसकी जो प्रदीप्ति थी वो आधी रह जाती है. प्रदीप्ति की अवस्था है, ईश्वर अवस्था आधी रह जाती है. X goes home permanently transformed. His parents and others do not understand and think him mad. अब ये this description we can correlate with Baba's story, isn't it? It looks like Baba's story. So X goes home permanently transformed. His parents and others do not understand and think him mad. His brothers understand and sympathize. X does not sleep or eat, but he is always radiantly happy. His parents call in physicians. His parents call him in physicians who give him injections and other treatment, but X remains the same. तो बाबा की जैसे हम वर्णन पढ़ते हैं उस टाइप का ये थोड़ा सा बाबा ने आगे का चित्रित करने के लिए है कहा है कि इस प्रकार 6वीं भूमिका में एक्स जाने के बाद आगे क्या होता है. तो उसकी जो सुपर चेतना थी उसके साथ वो 4 दिन रहने के पश्चात जब वो घर लौटता है थोड़ा सा दुनिया का भान आता है लेकिन उसकी प्रदीप्ति बनी रहती है. जब वो घर लौटता है तो पूरी तरह से बदला हुआ है, परमानेंटली ट्रांसफॉर्म. अब उसके माता पिता और बाकी लोग समझते नहीं हैं क्योंकि उसको दुनिया का भान नहीं है, आंख में रोशनी नहीं है, आंख कहीं दिख रहे हैं, उसका पता ही नहीं चलता है. तो उनको लगता है कि अब ये पागल हो गया. लेकिन उसके भाई उसे समझते हैं, वो उसके साथ सिंपथी दिखाते हैं और ना ही वो खाता है. एक जिसे यह 6वीं भूमिका का अनुभव हुआ है या ईश्वर साक्षात्कार की एक जो उसकी स्थिति है, तो वो ना ही खाता है ना ही सोता है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है. लेकिन उसकी अवस्था उसके माता पिता को समझते नहीं है और वो डॉक्टर को बुलाते हैं, उसको डॉक्टर इंजेक्शन और बाकी ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन उसका कोई असर एक्स पर होता नहीं क्योंकि ये अवस्था उसकी आध्यात्मिक अवस्था है. No doctor will help because this condition is spiritual condition. So he remains the same. One day, the 2 brothers, Y and Z, tell their father about the master from the east and beg him to take X to him. X is taken to the master. The master embraces him the second time and gives him the divine knowledge, 7th plane consciousness. Here, he is one with this divine ocean of infinite light. He is now God, the infinite. He becomes a perfect master. His 2 brothers become his most devoted disciples. So here the story ends. Baba's जो script है, wonderful script for a spiritual theme, spiritual movie. तो यहाँ पर हिंदी में मैं बोल देती हूँ. तो उसके माता पिता उसको समझते नहीं, उनको लगता है पागल हो गया. ये हमने देखा, डॉक्टर को बुलाया जाता है लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है. तो एक दिन उसके 2 भाई जो है अपने पिता को कह देते हैं कि कोई गुरु आया है पूरब से और उनसे विनती करते हैं कि ये एक्स को उनके भाई को गुरु के पास ले जाने के लिए विनती करते हैं. देखो ये वही वाई और जेड है, पहले जन्म में क्या क्या उनका नाता था, वही उसकी मदद करते हैं, देख लीजिए. और फिर ये गुरु के पास एक्स को लिया जाता है, गुरु उसे आलिंगन देता है और फिर उसे
दैवी ज्ञान देता है। ध्यान की बात है, ध्यान देने की बात है। अब तक की यात्रा में कहीं भी दैवी ज्ञान का जिक्र नहीं है। आप गॉड स्पीक्स भी पढ़ेंगे, टिल द सेवेंथ प्लेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द डिवाइन नॉलेज, इट्स ओनली ब्लिस एंड पावर। डिवाइन नॉलेज कम्स इनटू पिक्चर ओनली इन द सेवेंथ प्लेन। तो यहाँ पर भी सातवीं भूमिका में ही ये दैवी ज्ञान पिक्चर में आता है। तब तक कहीं केवल आनंद और पावर, शक्तियां होती है ना। गॉड स्पीक्स में भी यही दिया है। तो यहाँ पर वो गुरु उसको आलिंगन देता है, उसके आध्यात्मिक, उसको आगे, जैसा हम कहते ना पुशिंग द स्पिरिचुअली, तो यहाँ आगे धकेलता है। सातवीं भूमिका की चेतना उसे देता है, मतलब उसको ईश्वरी साक्षात्कार गुरु के आलिंगन से मिलता है। और यहाँ पर उसे वो क्या अनुभव करता है, तो एक अनंत दैवी समंदर, प्रकाश के अनंत दैवी समंदर के साथ मैं एक हो गया हूं। मैं भी उस अनंत दैवी प्रकाश के समंदर का हिस्सा हूं, ऐसा उसे यहाँ अनुभव होता है। अब वो स्वयं ईश्वर बन गया, अनंत ईश्वर। अब वो सद्गुरु भी बनता है आगे, और उसके जो दो भाई हैं वो उसके कट्टर शिष्य बन जाते हैं। यहाँ पर ये जो बाबा ने मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखा था, ये खत्म हो जाता है। पर ये बहुत अद्भुत है। बाबा तो गुरु के गुरु है, उस्तादों के उस्ताद है। ये देखो, 1 2 3 4 5 6, केवल 6 पन्नों में बाबा ने पूरा गॉड स्पीक्स और पूरी दुनिया और पूरे सृष्टि हमारे सामने रख दी। रियली, खास करके वेस्टर्नर्स रिक्वेस्ट, इफ यू नो समवन, आस्क समवन टू मेक अ मूवी ऑन दिस सेम लाइन। Beautiful. वो मेहर तेज है ना, मेहर तेज भी मूवी बनाता है ना हैदराबाद Right, में। right, right. सन ऑफ गिरधर कुलकर्णी, आस्क हिम टू मेक अ फिल्म ऑन दिस I think that's a great thought. We'll plant that in his mind. प्लीज। See या where it goes. हाँ हाँ, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन। ये तो अपने बस की बात नहीं है, बट मेहर तेज कैन मेक, और समवन फ्रॉम द वेस्ट, दे कैन मेक अ मूवी ऑन दिस। Mm. Yeah, so there are some messages who have experienced the getting subtle body separate from the gross body. Try this link. Acha, Mr. Prakash has also posted some links. What is it, Mr. Prakash? No, no, this is, I posted privately to you, but Aha, okay. whenever I saw that reference to vapory forms and everything, actually, if now I'm sure all of you can definitely read, but I just thought there's a book called something about consciousness, the truth consciousness or something by Mishlove, Michlove. And in that book, he often he occasionally talks about a person by name Ram Charka and his views on the subject of consciousness. And in this particular thing, I gave you the link for. You actually will find exactly what Baba said here. The vapory forms and all that stuff dissociating from the body, and then these are all out of body experiences which this man describes in 2 pages. I mean, very detailed. So if anybody wants to read, I mean, obviously we will take what Baba said. Ramachakra's theosophical perspective. Yeah, yeah. Okay. And that section, there are a lot of other Egyptian and other things, but this particular section might interest a lot of people. Yeah. So I don't know how right it is to share to everybody, but I just thought you might want to take a look, and then if you feel like, you can share anytime. And yeah, Shaw Butler, Shaw has Yeah, posted. I was about to read that. Here is one message from Shaw Butler to everyone. I have had the experience of smelling fragrances a few times, first at the time of the passing of my great aunt, at the time Bob Bold
who was blind had the same experience. We had just left a Baba meeting at Darwin and Jean Shaw's home. And that is important. This was back in the early 60s, 70s. The other time came when I embraced one of Baba's twins, Baba's nephews, after a long drive, missing the meeting but catching the twin just before they went to bed. Over the years, at certain critical times, I have had few experiences connected with with what I perceived to be Baba's work, both in Baba context, um, sorry, or more indirect context connected with God's work. However, doesn't Baba tell us not to talk about these experiences? Yes. I only do this now to clear up any misunderstanding about some of the things I have been led to take on in this life that have involved the Baba community. I consider myself a baby on the spiritual path, but find those critical times where I was inwardly led to certain actions to be taken, to be key moments. Yes, Jai Baba, Mr. Butler, Baba has also told that his loved ones may not get these experiences. And then still they will be traversing through these plains, but they will not even be themselves aware of it, or someone else will know, because Baba has given word, I will tie band on their eyes. Blindfolded. Baba has told, I will take my main blindfolded. Yeah. So even if someone is on the plane, will not know, that person will not know, and we need not worry. Our job is to love Baba, that's all. But because the topic was there, just to imagine, there was one message from Balraj Deshpande, which I don't see now, whether he has removed it. I was asking about the experience of separation of subtle body from the gross body. And for that, Deshpande, who is there? Yes. Yeah. Yes. Yes. Please speak about it if you don't mind. Because the Ma- subject is there, so आवा- it's not. आवा- आवाज येतोय का? Can you hear me? But please speak in English. आवाज आ रही है. अरे नाही मला ते एकदम इंग्लिश मध्ये जमणं एकदम क्लिअर होत नाही. एकदम मला इंग्लिश शब्द आठवत नाही म्हणून मी जरा मराठीतच बोलण्याचा प्रयत्न करतो. तुम्ही त्याचं He says ट्रान्सलेशन he करा. will tell in Marathi, then I'll translate in English. Quick, Jai Baba. Okay. Thank you, बाबा Jaina dear. हा, Now you can stop screen share. हा. Thank you so much. It is so clear. You are doing screen presentation wonderfully. You have wonderful voice, which we couldn't hear today. So, बाबांकडे yes. येण्याच्या अगोदर मी जेव्हा या मार्गात आलो तेव्हा हा सुरुवातीला मला हा अनुभव आला. तरी मला जे गुरु भेटले होते त्यांनी मला जो मार्ग सांगितला होता त्याप्रमाणे जप करताना हा मला अनुभव आला होता की मी आणि माझं शरीर हे अलग अलग आहे. Mhm. आणि मग त्या ऐक्यात नंतर मी जेव्हा बाबाकडे आलो तर बाबांनी माझ्या डोळ्यावर पडदा टाकला म्हणा की त्यानंतर जे त्यावेळेस रिक्वेस्ट केली होती मी की बा मला हे अनुभव नकोच म्हणून, कारण की मी कोणीतरी आहे असं मला वाटत होतं त्यावेळेस. आणि हे म्हणतात ना दुसऱ्याच्या मनातलं ओळखणं वगैरे किंवा जे बोललेले शब्द खरे असतात तेही एक्सपिरियन्सच आहे. 1 minute, 1 minute. Let me just, please, let me translate this much. What he is telling, that before coming to Baba's fold, when he was in the spiritual, he has a lot of study, Vedanta, this, that he was doing jap and meditation. He had this experience of separation of gross and subtle. Then he came to Baba, but he never wanted this experience to be continued. And that's true. Because, see, I know a woman, she automatically, without any efforts, used to know the thoughts of the minds of other persons. It becomes so much so, and so much she was troubled because of this, because people are something else on the face, and there is something in their mind. It was so much a headache. Finally, she begged of Baba, Baba, please, this is unbearable. Please stop this.
Yeah, so similarly, Deshpande Bhau has Yes. asked then Baba to stop that experience. Yes, please continue, sir. Yes. देन दैट एक्सपीरियंसेस स्टॉप उसके बाद वो अनुभव खत्म हो गए और सिर्फ बाबा और बाबा, बाकी कुछ नहीं. So he begged Baba not to give that experience again, and now as he is with Baba, no more experiences he's saying. Okay, thank you, Deshpande Bhau. Jai Baba. Beautiful. जय बाबा, जय बाबा. Anyone else will likes to share, say something, or ask something, No, Jai Baba? I was about to ask you. You Please. share your experience. I don't have any. So yeah. Because you mentioned Yeah. that you had. I mean, I don't know. Yeah. Again, like somebody here said that if you don't Yeah, want no, to, it that's is okay. perfectly fine. Because I just want to ask you. That's it. Just a minute. Just a minute. काही वेळेस मला भविष्यातल्या घटना होणार आहेत ह्या माहित होतात. अजूनही भविष्यातल्या काही घटना मला होणार आहे हे होतात, पण मी त्याकडे Yeah. दुर्लक्ष करतो. Deshpande will want to continue. He says sometimes he gets the clue of the future things which will happen. He gets the clue of it. He knows them beforehand. Yes. Anything else, Deshpande? हा. पण मग त्यात काही चांगल्या असल्या तर बरे असतात, पण वाईट असल्या तर मग जरा एक प्रकारची भीती वाटते. If the कोणाचा things ऍक्सिडेंट are होणार good, आहे. he is happy. But if the bad things he knows, then he is sad. Yes. Yeah, that's all. Okay. Thank you, Deshpande. Now coming back to the question of Mr. Prakash, sorry, to my father, to Jimmy Khan, and sorry, Baba, without any this thing. But see, this is momentary, as I told you. And then Mayor it Prabhaji, is, one, okay, if I can always include this in what I'm asking you. If you don't feel like sharing because it involves other people, and since it is being recorded, you can always say no, and then we can, or we can pause recording and you can say, and then we'll resume recording. It's up to you. I just want to let you know. it's okay. See, these experiences, after all, as Baba said, these are all experience of before seventh plane, whatever all milestones. experience These are all milestones. before seventh plane, whatever experience of sixth plane, fifth plane, any plane, whatever type of experience, after all, it is a part of this illusory world. There is nothing great about it. And just to understand the situation we were reading today, by Baba's grace, it's very clear because I have experience, and it is a momentary experience. And not for the sake of, and it is never repeated. So, and as said, it is after all a part of illusory world. We should not give much importance to it. But just to make the point clear, I was in Ahmedabad that time, and my family, my daughter was in Nasik, my husband was in Mumbai, and I was just thinking one day, what is life? I was manager in a bank. I was doing my job honestly, rather excellently with Baba's help, helping people, not going anywhere out, eating simple food, tea with bhakri and roti and all that. And reading Baba literature, trying to learn Gujarati, that's all. Simple life. And early morning I used to get up. That was old habit. I used like to see sky and stars and all that. But I was not able to go to the garden because it was early morning. I was alone, staying alone. But one day, early morning, maybe 5 or 5:30, I was not in a deep sleep. I was not fully awake, or I was awakened, sort of.
for no reason. I was just lying, and all at a sudden, as explained in this, now it is today I got the answer to my many questions rather. So there is no problem in telling. So far, I didn't tell. I experienced that I am. So now instead of saying I am that subtle body, as Baba explained, exactly the same way. It is same form as we look, but it is vapory, as Baba said. That I could not have explained better if I would not read this. I just knew I was floating in the air, somewhere up. And I saw I am also lying down. My body, or my gross body, we can say, was still lying on the bed. It was motionless. But I am floating in the air. And I myself am seeing my body. So Yeah, we that is can the better understand what Baba has explained. That was a subtle body seeing itself, the gross body. But the happiness was immense. Happiness was immense. And Yeah. if I can try to explain, the lightliness, so light. So, see, as a body, we have so many things, but there you have nothing. No, miss, it is a different thing. I think I can't catch in the word, but that happiness, so light, the feeling is lightliness and happy and just feel like, and I'm seeing, and then I see around and I say, oh, what is this? I wonder to myself, the thought is there. Even Yeah. though I'm seeing my gross body and my subtle body is floating, the thoughts are there still. And Yes. I'm wondering, after a while, I'm wondering, oh, I'm there, then who am I? My subtle body is asking, who am I? I'm there, lying on the bed. Then who am I? And what is this happening with me? After a while, seeing around, then I'm wondering myself, oh, what is this happening to me? And after a while, I come down. That's all. Definitely, we take Baba's name always. So, morning time, so we take. That's all. Then but I think many hours I was like floating and I felt like feathers, like. Well, I went to bank, I did my work, and then miss I came to consciousness, gross consciousness in no time. I can't say time is no calculation there. How much time and all that, please don't ask, I don't know. I can't say how much time it lasted, but I came down. And there the experience, but it lasted in my mind. Beautiful. I told my father, I think, and he said, wonderful, that's all. He will not give much importance, and we don't give. Hey, it's beautiful because I tell you why. Because it does give you an experience that there is a lot more to what we know, and the question which you just raised, who am I, kind of is will guide you Ah, forward, and that's a beautiful experience. Yeah, yeah. ah. But then after we come down, no, then our mind again starts, oh, why Baba is happy with me, what good I did, why Baba gave me this experience, what is there? Those thoughts then starts drilling your Yeah. brain. Yeah. No, it's beautiful. Great to know that. Yeah. But as I've heard. Baba says that it is all illusion. Yeah, yeah, that's right. But thank you for He's illusion. sharing that. Yeah, thank you, Balraj ji. Thank you. Yeah, and I think we are almost there, Meher Kripaji, for today. It's Yeah. 11:45 here. So we'll request Surekha Tai to sing Aarti today. It is Yeah, saying, yeah, Hello. of course. Jai Baba. Am I audible? हो मॅडम. Am Yeah. I audible? हो ताई, आवाज येतोय. हा. तुमचा व्हिडिओ चालू करता का?
भाऊ अं, आहेत का? डोंगरे भाऊ आहेत का? आहेत झोपले ते. बरं झोपू दे, तुम्ही गा आरती. हे आपले जहाँ कल्पना गा. अवतार जहाँ कल्पना अवतार मेहर नाहीतर बाबा मग की ती जय. एक मिनिट ते रुस्तुम इराणीची आहे ना, मेहर राज आहे राज तुझनु तृणव जगत नाही मा. ते नाही येत मला. ती मला पाठ नाही आहे. बरं जहाँ बरं कल्पना तुम्ही हा ठीक आहे. जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार, दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदुद्धारो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो, धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना, काहे बढ़ाई करूं मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो, सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो, तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो, सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंतन कोई पाया, तुम हो अनंत खरो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो, अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो, सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमिरो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो, दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदुद्धारो मेरा मन,
आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो ओ अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय। अवतार मेहर अवतार बाबा मेहर बाबा की जय। जय। Thank you, Tai. Jai Baba. Thank you, all of जय you. जय Thank बाबा, you, जय Mr. बाबा। Prakash, Thank you. Diana, That was Vicky, Thank everyone. Thank Thank you, you. everyone. Everyone. Beautiful. Thank you, Baba. Avtar Meher Baba ki jai. की जय. जय We all will say together, Baba ki jai. Jai Baba. जय अवतार मेहर बाबा Meher की जय. Baba ki अवतार jai. मेहर बाबा की Baba जय। थैंक यू बाबा, जय. जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा। Jai जय Baba. Thanks, जय बाबा। Paji, and thanks, Diana, and thanks everybody. Jai Baba. Jai Baba. जय बाबा। Jai Baba. Jai Baba. जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा.